Good evening, ladies and gentlemen, as I welcome you to another episode of the Edifying Talks brought to you by the Computer Science Association SRM, where we bring to you one of the best peoples from the industries who can give you the correct guidance on the trending technologies and your careers. So, without further ado, let's get started. Today, we have as our speaker Mr. Shashank Mishra, who is a data engineer at Amazon. He has worked in McKinsey and Company. He's also a former Paytm employee. So let's get to meet the man, Mr. Shashank Mishra. I welcome you on behalf of the team and CSEA SRM. Hey, yeah, thank you. Thanks so much, team, for inviting me in this edifying talk. So it's pleasure to be here, first of all, and we are going to talk on different topics, and I'll try my level best to share all the experience, like in my 4 years of industry experience, and before that, whatever I have faced, like in my academics, how I started my journey. So this is going to be a definitely a fun session for you guys. So I'll try my level best to guide you through this. So Totally looking forward to it, and I think it's going to be an interesting session for both of us. So, yeah, thank you all so right. So much. before we get started, just have a small thing for you. So you work for Amazon. Mhm. So what if you give me 5 years of free Amazon Prime, and I'll ask you the easy questions? What do you Uh, say? I could have, but the reason is even I don't have Amazon Prime access. Like this is the myth people used to think if a person is working on a such product-based company, probably a e-commerce or a video streaming company, they used to think that this guy must be having like some free coupons or some free membership. So to be very honest, I do not have it, but I will So definitely that is ask. a little You can ask disappointing. me you can ask me difficult questions, not a problem. But So difficult question, ladies and gentlemen, and Mr. Shashank Mishra it is. So we'll get started. So it all begins with your schooling or your college life. You went from Lucknow University to NIT Allahabad. So how has your college experience been? yeah, so that's a journey you can say full of struggle, to be very honest. So see, like I'm from a very middle class family, right? I do remember back in 2009 or that period, like before 10, 12 years back, even like nowadays, my father is basically a taxi driver. He loves his profession. He was just doing it. And because of his efforts, here I am today. So that was the thing. And we all know कि हमारा जो mentality होता है middle class में, we all know कि थोड़ा society का influence ज़्यादा होता है. So what we used to do, okay, I'll prepare for IITs, I'll prepare for NITs and these kind of things. Okay, so when I was about to complete my 10 plus 2, I had no idea about the computer science. First of all, I was good in academics part, like core physics, chemistry, and maths kind of thing. I was good at it. Okay, and at that particular point of time, I just used to see people that they are using computers, and I used to go to the labs as well, but I was just only playing the pinball. That's it, nothing else. And so the story how it started actually. So since I was also aiming for the IITs and these parts, but the reason was like there will be probably one out of 10,000 or lakh who is exceptional candidate and prepare for IIT by his her own and crack it. But I was not that exceptional, so definitely I had to join some good coaching. But since my family was not able to afford that fees, so I didn't join any kind of coaching. So my at that time point my idea was that I'll be going for a government university and I'll take this course like bachelor's course like BSc something like that, and उसके बाद मैं थोड़ा सा prepare करूंगा government jobs का like bank, PO, SSC, etc. That was my common mentality at that time. And apart from that, I was so scared of the competitive exams like AI Triple E was there, I do remember, and UPTU was there. So I was so scared of it, like I didn't even try by my own. Although I was good in, like as I told you, like I was good in PCM, but I didn't have that kind of motivation that okay, I should go for these exams, at least I should try. I was so scared of it.
So that's how it was planned. And I talked to my father that okay, I'm going to Lucknow University. I'll fill the form for the PCM because this stream looks good to me, and I'm good in these subjects. I'll try my level best, and will probably look for the teaching career or different things. That was the plan. So when I was traveling to the university, in the middle, what I thought, computer science is the part which like is still is missing from my skill sets or the my knowledge domain. So what I did, I just cut the chemistry part and made the combination physics, math, and computer science, and just submitted the form. And yep, I got admitted as well. So that was the I was maintaining the balance. Okay, अगर यार CS वाला workout नहीं करा तो physics, math also I have. So सब maintain हो जाएगा कुछ ना कुछ balance. So we all know, I mean, the education environment in the government universities. So guys, to be very honest, I was suffering from like different things. First, the educational environment, and there was no one to guide me. There wasn't any kind of thing that could aware me. Okay, like ये पढ़ लो, ये देख लो, या इस तरीके की चीजें कर लो, इधर भी स्कोप है, इधर भी फ्यूचर है. लाइक मैं बस एकदम डार्क में था सब कुछ. आई वाज ऐसे ही बस चल रहा था. खुद का इंटेंट भी नहीं था, खुद मेच्योर नहीं थे कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है. ठीक है, कर लेंगे, अभी पापा तो कमा ही रहे हैं, जो होगा देख लेंगे आगे. बस इसी मेंटेलिटी से आगे बढ़ रहा था. तो वो 3 साल मेरे ग्रेजुएशन के बहुत ही वर्स्ट थे, क्योंकि मैंने कुछ सीखा नहीं. फैकल्टीज आते नहीं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, कभी क्लास का तो शक्ल ही मैंने कभी भी देखा होगा अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल्स, क्योंकि सब कुछ करना है. आई वाज जस्ट मगिंग अप द सॉल्यूशंस, लाइक नॉर्मल सॉल्यूशंस, कंप्यूटर लाइक सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट कन्वर्जन्स के, राइट, और इस तरीके से एरे ट्रावर्सल्स और इस तरीके के नॉर्मल प्रोग्राम. आई वाज जस्ट मगिंग अप बिकॉज मैंने सीखा ही नहीं, मैंने समझा ही नहीं व्हाई एरे इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर मैं ये एक लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ या मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहा हूँ, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. सो आई डिडंट फोकस इट एट ऑल. वही कि खुद का इंटेंट नहीं, खुद का फोकस नहीं. आज तो तुम लोगों के पास यार सब कुछ है. आई वाज टॉकिंग अबाउट बैक 2011. तुम लोग तो आज के टाइम में इतना स्मार्ट हो, मैं अपने आप को उस टाइम से कंपेयर करता हूँ तो लाइक जीरो से नीचे माइनस में जितने नंबर्स आते हैं मैं उतने अपने आप को दूंगा. सो ये सीन चल रहा था. बट आई डू रिमेम्बर in 2013 I was sitting in my class and I saw a paper cutting. There was a girl, she scored like second rank in UPMCA. At that time I found okay भाई MCA एक ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि वो 2 साल मैं बहुत मोटिवेशन बनाने की कोशिश कर रहा था फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स, एसएससी, बैंक, पीओ. बट यार वो अंदर से आ नहीं रही थी फील, बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि ये कुछ करना है. सो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस एमसीए प्रोग्राम, and then I realized okay, it could be a good option for me, I should definitely go for it. So that third year was very hectic for me, because for MCA I, like, you remember that I was only knowing about the IIT pass. I didn't even know like what NIT is, what triple IT, what BITS. I was knowing just only few colleges like IIT. Okay, हाँ एक ये मेरे को पता है, टॉप है ये, ठीक है. फिर उसके बाद HBTU एक कॉलेज पता था मेरे को, और IIT लखनऊ है ये पता थे, और इसके अलावा मेरे को दुनिया के और कोई कॉलेज पता ही नहीं थे. तो जब ये चीज हुई तो I thought I should get into some coaching where I can prepare for the MCA entrance exams. So I joined a coaching in Lucknow, and I do remember that day. So मैं सर के पास गया, सर से बोला सर मेरे को UPMC की तैयारी करनी है. And he was like, डूड तुम्हें ये निमसेट की तैयारी नहीं करनी है, इससे NIT मिल जाएगा. मैंने कहा सर NIT पता नहीं कैसा कॉलेज होगा, आप मेरे को सर HBTU की तैयारी करा दो, बिकॉज UPMC I know is a option. He was like, dude क्या हो तुम्हें NIT का नहीं पता ये वो. So बोला सर मेरे को नहीं पता. Now you can see the difference कि कितना ज्यादा lack of awareness था. अगर चीजें हमको बिफोर हैंड पता होती हैं. But sir, to be honest, somewhere this lack of awareness has proved to be beneficial for you. Like Yeah, today you definitely. have aced 3 different major companies, and it could have been easy if if you have more knowledge about these things, Yeah. because then things start getting more complicated. You will start thinking about 10 different of things, like what to do, where to go for it. Yeah, definitely. So And that's true. I agree with it. Like there was a lack of awareness, and
it pushed me to explore the things by my own, right? I was just deep diving into it. So that's the benefit, to be very honest. So that third year was very, very complicated for me because I had to attend my university classes. I had to go for my coaching classes, 6-8 hours in the coaching, then come back to home. वही शीट्स लगाना, आरडी शर्मा पढ़ाई जा रही थी पूरी, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स में वही आता है, निमसेट का जो होता है उसमें मैथ्स का होता है, रीजनिंग पढ़नी थी मेरे को, इंग्लिश भी प्रिपेयर करनी थी. आई वाज सो बैड इन इंग्लिश, वो भी मेरे को नहीं आता था कुछ भी. एंड as I said कि थोड़ा financial crunches है, so I never asked my parents to let's give me $100 $200 because मेरे को बस से ट्रैवल करना है, ऑटो से ट्रैवल करना है, because यूनिवर्सिटी घर से मेरा like 15 किलोमीटर दूर थी. So I was just traveling from my bicycle. So 3 years मैंने 365 days हर एक साल में 15 किलोमीटर जाना साइकिल से, 15 किलोमीटर वापस आना डेली, like 30-35 किलोमीटर. So it was full of struggle. वही मैं कह रहा हूँ, एक एक पीस मैंने देखा है. बट वो जो मैंने प्रिपेयर करा उस ईयर में बहुत बेनिफिशियल था मेरे लिए. I cracked NIMSET with all India rank 43. I cracked BHU with all India rank 10, HU 131 rank, UPMCA 19 rank. So it was a like बहुत ही ग्रेट फीलिंग थी मेरे लिए. एंड अब जो NIT चूज करने का पार्ट था कि I could have gone for NIT त्रिची, I could have gone for सूरतखल वारंगल, मेरे पास सारे ऑप्शंस ओपन थे, ठीक है. बट थोड़ा सा फैमिली के टच में भी मेरे को रहना था. इसकी स्टोरीज में थोड़ा और आगे कवर करूंगा एक जगह, जब मैं थोड़ा मैकेंजी वगैरह के बारे में बताऊंगा आगे के sure. में. तो यहाँ पे बस समझ लो कि थोड़ा फैमिली से नियर बाय ही रहना था समहाउ. एंड मुझे नहीं पता, मैंने रैंडमली अपने फैमिली में एक चीज बोल दी थी उस दिन एक लाइन मेरे को याद है, और वैसे तुक्के में बोली थी, मुझे नहीं पता था कि वो सही हो सकती है. तो मैंने ये बोला था कि अगर प्लेसमेंट लगनी होगी तो मेरी NIT इलाहाबाद से भी लग जाएगी, एंड नहीं लगनी होगी तो मेरी NIT त्रिची से भी नहीं लगेगी, क्योंकि फैमिली वाले बोल रहे थे चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है. हमें पता है यार, वो बोल देते हैं, बट इनसाइड कैसी फीलिंग होती है वो उन्हें भी पता है, ठीक है. सो उन्होंने बोल दिया और मैंने भी ऐसे रैंडमली बोल दिया, एंड इट ऐसे वो टर्न हुआ है और एकदम सही डायरेक्शन में. मैं वो आज भी सोचता हूँ कि यार मैंने तुक्के में बोला था, एंड सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया. सो ये जर्नी थी मेरी NIT इलाहाबाद तक पहुंचने की, फ्रॉम माय स्कूल टाइम, और कैसे रैंडम डिसीजंस मैंने लिए. सो दैट्स वाज ऑल अबाउट द एकेडमिक पार्ट. Amazing, very humble and very modest story you have got there. I mean, it will definitely be inspiring a lot of people who don't have dreams, or they don't aspire to see the dreams, or they don't know where to start from. It's going to be really helpful for them. So now coming to this very major topic, that you are working as a data engineer for Amazon, and you also have previously worked for a Paytm and McKinsey company with the same role, if I'm not wrong. Yeah. So what is this data engineering, and how did you got into this field? So actually, okay, when let's say I landed into the NIT, okay, and if I'm taking the base, my base was zero, still zero. When I landed into the NIT Allahabad, my base was zero, because in my graduation, like, it was worst. I was bad in computer science. So for me, being into the master's course, I had to start everything from scratch. My programming part, my DSA concepts, and again, like, I was in the NIT Allahabad, but my course, my stream was different. Like MCA, we were like 80-90 people in the batch, and in comparison of BTech, like 3,000-4,000 folks. So we were like these numbers, okay. So we had to struggle a lot, definitely, in terms of the getting opportunities, and in terms of the like quality of knowledge and experience from different folks. क्योंकि हमारे सीनियर्स भी उतने अच्छे नहीं थे, एंड मैं उनको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि यार उनको ही उस तरीके की अवेयरनेस नहीं मिली, तो वो हमें क्या उस चीज के बारे में बताएंगे, करेक्ट. सो जैसे आज के टाइम में मैं देखता हूँ कि पीपल आर सो अवेयर अबाउट, ओके यार, these are the importance of the development skills, these are the trending trends in the IT industry, okay, like big data, AI, ML, data science, cyber security. There was nobody to tell me, okay, what it is. First year I just spent on the like DSA side, programming and these part, and after that I was just copy pasting the projects from internet and was showing it to my faculty just to get the good grades. So I was just cheating. I was thinking, okay, कितना cool बंदा हूं मैं कि टीचर्स को एकदम फैकल्टीज को फूल बना दिया. बट जब आगे 2 साल बाद रियलाइज करा तो इट वाज लाइक कि मैं तो खुद को ही चीट कर लिया. मतलब आई डिडंट लर्न एनीथिंग. मेरे को सर्वाइव इंडस्ट्री में करना है, टीचर्स
सर्वाइव कर चुके हैं, वो तो पढ़ा रहे हैं, वो तो अर्न कर रहे हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं, उनको हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी That मारी। is very valid point. Matlab, at the end, it's always you versus the world. It's not the Yeah. grades, it's not the report card you get at the end of 4 years. It's all about the knowledge and how you face it. So I got the placement in Opera Solution. So एक और कंसेप्ट मैं एक लाइन में बताऊंगा, जिनको ये कंसेप्शन है कि टीयर 1 कॉलेज में पहुंचने के बाद नौकरी प्लेट में लगी हुई मिलती है, सो दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। ठीक है, किसी भी जगह से तुम बिलोंग करते होगे, इफ यू आर नॉट पुटिंग योर एफर्ट्स, ठीक है, कोई कंपनी तुमको नहीं लेके जाने वाली। खाली ये सोच के कि ओके बंदा आईआईटीएन है या एनआईटीएन है और इंटरव्यू में परफॉर्म कुछ भी नहीं कर रहा, रैंडम बकवास चल रही कुछ भी, उसका भी कुछ भी मैटर नहीं है, नहीं लेके जाएगी। सो आई नो दूसरे कॉलेजेस में आप हो, आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, आप या तो बैठ के रो सकते हो, एक्सक्यूज बना सकते हो कि यार नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे हम, हमारे पास तो ये कुछ है ही नहीं, या तो फिर टेक द चैलेंज एंड फाइट। सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड दो ऑप्शन रखो अपने पास, ठीक है। तो ये चीज मैं बोलना चाहूंगा उनको, क्योंकि मेरा भी ओपरा सॉल्यूशंस में मेरे को 20 लाख या 25 लाख का पैकेज नहीं लगा था। आई स्टार्टेड माई करियर विद 5 LPA, ठीक है। सो जिनको अभी वही लग रहा है, सो मैं भी तुम्हारे लेवल से ही स्टार्ट करा। So, Opera Solution mein, it was like a service-based firm, and there I was started working as a, I won't say started working, I was like noob. I started learning as a software engineering part. So there, like I was working on the backend part. Okay, I was trying to learn how backend actually work, APIs, REST APIs, and these things. I was working in that part. And I'm a kind of guy who loves interacting with different people. So in my company, there were few projects which were running on the big data side, big data domain. Okay, so on like जब TD टेबल पे टेबल टेनिस खेल रहे होते थे या कैफेटेरिया में, I used to talk to them. Okay, like what you guys are working on. So they told me that okay, this is the big data. We have this problem use case. We are trying to work in such a way in our project. So it looked very, very fascinating to me. Like big data, okay, like terabytes, petabytes of data, distributed computation, distributed storage, and how we are processing it. So it looked very, very interesting to me. And from that point onwards, I started exploring it. It could have been much better if I would have started it like in my second years, right? First year, second year, like exploring new technologies, but it was late for me. Like I started exploring in my industry period. So that was a point. I just started doing some hands-on. I was going through with the different lectures, videos, blogs to understand the basic frameworks and like fundamental building blocks of big data, data engineering. When I was comfortable enough, I would talk to my team leads and my manager that some sort of I'm gaining the expertise in big data domain as well. Can you guys help me to staff in projects where I won't say like 100% staffing, but 20-30% staffing, so that I can shadow someone to learn the big data side. So that's how it started. And after that, I felt I should take like ownership of different projects, or I should take the challenging projects. And for that, I was seeking for a good or startup based level companies. That was my first switch when I applied in the Paytm, and I got the opportunity. From the Paytm, I would say my journey started as a core data engineer, because I joined their central data warehousing team. I was working independently. Like to share like how many attempts it really took to you to crack the Paytm. I mean, it's come on, it's a dream to work under Vijay Shekhar Sharma, one of the Yeah. best entrepreneurs in the country. Yeah. And I personally adore the person. So how's the interview, and how many attempts did it really took for you to crack it? So see, for me, Amazon was always my dream company. And people who don't know that I cracked Amazon in third attempt. I was trying hard for Amazon like in 2016 from my placement time. I was rejected in placement first. So placement story, I'm not sure if you guys have prepared this question. Placement story is also very, very amazing. My story is also very, very amazing, the placement side. But starting 7 companies, I wasn't able to clear the written round. First company was Amazon. I was rejected in the college. Second company was Paytm. I was rejected in the college. And Adobe was there. SAP Labs was there. Oracle was there. Wooker was there. Like भाई 7 कंपनियां निकल गई स्टार्टिंग के. नाउ यू कैन फील द प्रेशर. भाई कैसा होगा, मेरे दिमाग एकदम
हट गया था कि अब लाइफ में आगे क्या होगा, एक ड्रीम लेके आए, नौकरी नहीं लगने वाली। सो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, वो बहुत अच्छे से है। सो पेटीएम के लिए यू कैन से व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर माय फर्स्ट स्विच, so again I applied in Amazon, but that was my second attempt in 2000 like 18 end. Again I was rejected in the third round. So okay, that happens. And Paytm, my second attempt, and this time, yeah, in the second attempt itself, I was able to clear it, and that was an amazing journey. I would say, जो मेरे करियर में डेटा इंजीनियरिंग स्किल सेट्स में enhancement आई है, या मैंने जितना कुछ सीखा है, Paytm played a very very important role. And why? Because when you work in such kind of environment, like startup kind of culture, so there development is very rapid, right? Requirements are very rapid, scale is quite high, and you will be working under the strict timelines. And जब ऐसा प्रेशर आपके पास होता है ना, देन आपके जो स्किल सेट है ना, वो बहुत अच्छे से निकल के आता है। ठीक है, आपको भी लाइक यू हैव टू बी ए क्विक लर्नर। ठीक है, रिक्वायरमेंट आई, कैसे करना है, आई नीड टू लर्न थिंग्स क्विकली एंड नीड टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, एंड दे शुडंट ब्रेक एट ऑल. So that's how like I was working on good open source frameworks and got to know about different tech stacks and cloud services. I was introduced in Paytm itself, so that was a good learning for me in terms of the data engineering skills in Paytm. So sir, आपका जो profession है, that is you are a data engineer. How different is it from being a data scientist or a business analyst or a data analyst? And क्या skill set इसके लिए जरूरी होता है data engineering के लिए? Okay, that's a good question, and I know people are really confused about it. Mostly freshers, they are totally confused, and I won't blame them, right? Because जब इस जगह पे सिचुएशन में आप होते हो, being a fresher, you have no idea. ठीक है, so definitely I'll talk about the differences. So please guys listen this carefully, and I'm just whatever I'm sharing based on my industry experience that I have, because I've worked with a number of data scientists, top-notch data scientists, engineers, business analysts, data analysts, everyone. So I'll take an example as well. And first, I would definitely talk about the categories. So the big data domain is quite wide, right? Its range is really wide. And I will segregate into two parts. First part is where like you sound technically very good, right? Technically very good means you have a solid understanding of programming, you have solid understanding of DSA side, you have a solid understanding of how backend system works, core computer fundamentals. Okay, if you are good at it, you have 2 3 4 major profiles. You should definitely look for that. Data engineering is one of them, data scientist is one of them, machine learning engineer is one of them. Second part is where you are average with your technical skills, right? The programming part, DSA side, and these stuff. You have different profiles like data analyst, business analyst, business intelligence engineer, ETL developer. So these are the two categories actually. You can divide the big data domain. Now I will definitely focus on the first category, and नाउ लाइक आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि सेकंड कैटेगरी में थोड़ा सा टेक्निकली एवरेज आप साउंड कर सकते हो, क्योंकि वहां पे यू विल बी वर्किंग मोर क्लोजली टुवर्ड्स द फ्रेमवर्क साइड, you will be closely working with the business requirement side, right? So that is the thing. Okay, now come to the main part. I'll take an example. So let's say I'm an Amazon e-commerce. On Amazon e-commerce, on every second there will be like millions of transactions will be happening. Okay, so definitely that platform is capturing that data, right? It would have been like capturing that data in any MySQL instance. It could be a distributed storage service, it could be a NoSQL database, anything like that. Okay, and now as a company we want to analyze that data. So there could be multiple requirements, like some dashboarding kind of thing, like I want to see in last 1 year how much revenue we have generated in each quarter or in each month. We just want to analyze that, and we need to send this report to the leadership, right? Because they do not want any Excel kind of data or any Excel sheet. They like, it's a human behavior. We can observe the pattern if it is correctly picturized or visualized. So that's the human tendency.
Okay, that is the one case. Second could be a case where we need to take data driven decisions. Data driven decisions, like if I talk about the recommendation system, if I talk about the Uber riding system, if I talk about the Spotify, right? How it is happening? It is analyzing your activities, and next time when you will be opening that platform, there will be some recommendation for you. So if I take an example of Spotify, let's say किसी को rap music सुनना पसंद है, तुमने पहली बार में कुछ सुने, नेक्स्ट टाइम जब तुम ओपन करोगे, न्यू आर्टिस्ट, न्यू एल्बम्स ड्रॉपिंग, ये तुमको रिकमेंडेशंस में खुद दिखेंगे. So how it is happening? That means they are analyzing your activity. Okay, what Shashank actually likes. Okay, they are analyzing the data. But as a data engineer, we are the frontliners, because I told you, right, data is at some xyz location. We need to bring that data in our system. Okay, like business requirements, we know. Okay, like हमको थोड़ा सा revenue related एक analysis करनी है, and हमारे कुछ टीम के machine learning engineers या data scientists हैं जिनको कि थोड़ा डेटा को एनालाइज करके रिकमेंडेशन इंजन बनाना है. ठीक है, सो दैट इज द प्रॉब्लम यूज केस. सो अब डेटा साइंटिस्ट डायरेक्ट रॉ डेटा बहुत ही मतलब वेग होता है, आपको उसको क्लीन करना है, क्लेंस करना है, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, अब डेटा साइंटिस्ट को एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाने के लिए उनको एक सेट ऑफ ट्रांसफॉर्म डेटा चाहिए. दे वोंट बी वर्किंग ऑन मल्टीपल सोर्सेज. ओके यार, यहाँ से डेटा पहले लाना है, इसको क्लीन क्लेंस करके पहले सिस्टम में लेके आना, देन आई विल बी राइटिंग माय मैथमेटिकल मॉडल्स ऑन टॉप ऑफ इट. Okay, so data engineers, that's what I said, data engineers are the frontliner. We will be working on this part, like pulling the data from different sources, writing scalable and optimized data pipelines, and dump that transform data into the downstream system. And those folks like data scientists, machine learning engineers, data analysts, business analysts, probably they will be working on the transform data side. So as a data engineer, this is my day-to-day activity, my, you can say, role and responsibility, like building those scalable and optimized data pipelines. And there, like now you guys might be thinking, coding kahan hai yahan pe? You talked about that. Okay, coding data structures, where is the coding part? So this central part, like I'm out talking about the pipeline. So there you need to actually code the things, like you will be coding how to pull the data, distributed format, how to make it distributed so that I can run it into a distributed cluster, like 100 200 nodes, how I will be storing it. Now there you will be having some business logics. As I talked, okay, किसी एक ट्रांसफॉर्म डेटा को बनाने के लिए probably I'll be using 5 different sources, like कि join कर करके मेरे को एक final transform data बनेगा. So I need to code it, right? And that's what I was talking about. Optimizations are very important. Like आप randomly 5 data set को ऐसे नहीं join कर सकते. You need to think upon how optimize I can write my pipeline. So there your coding parts, there your DS understanding comes into the picture. Okay, so that's the role and responsibility. And as a data scientist and machine learning engineer, you will be working on the downstream systems. And data scientists को मैं बोलूंगा तो they are core data scientists. Machine learning engineers are the all-rounder, because those guys will be working on some training and test data, like a smaller sets of data. They will be preparing their mathematical models on top of it. Once that is done, but data engineers don't know how to implement that mathematical model on the entire data set which we have in the downstream system. So their machine learning engine comes into the picture. That's why he should also have some sort of skill sets of a data engineer. He should also know some sort of skill sets of the data scientist, so that he can implement that mathematical model on the large or final data set which is present in our downstream system. So that's the entire thing. And in few lines, I'll definitely talk about the skill sets required to become a data engineer. First, programming side. If you are working on C, C++, you need to drop that idea, because as a data engineer, you probably will be working on 3 languages, Python, Java, and Scala. Second, data structure and algorithm understanding, definitely you should have. But the beauty of data engineering domain is that the DSA questions won't be hard as the software engineering profile. Like you can treat it like a, that the beauty of this data engineering domain, that they focus more on your engineering skill rather than तुम tree का code कितना मस्त लिख लेते हो. ठीक है, so that's why I love this domain कि हाँ यार
कम से कम वो ट्रेडिशनल चीजें तो नहीं चल रही कि अगर बंदे ने ग्राफ का कोड नहीं लिखा तब तक हम इसको हायर नहीं करेंगे, ठीक है। सो दैट्स नॉट द केस विद द डेटा इंजीनियर। दे यूज्ड टू फोकस, ओके यार तुम इतनी चीजें हैं तुम्हारे पास, लाइक क्लाउड सर्विसेज हैं, यू हैव डिफरेंट डेटाबेसेस, यू हैव लाइक यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, नाउ मिक्स दीज थिंग्स एंड create a smooth data pipeline. So that's the thing. So DSA sorted है, and understanding of SQL and NoSQL databases and transactional databases, that is also very important. You should know the fundamentals and important frameworks of big data like Hadoop, Spark, Hive, and Flume is there, Scoop is there. And before that, like what is the ABC of big data? Like what is distributed computation, distributed storage, what are the different file formats, okay, types of data like structured, unstructured, semi-structured. You should be aware with that. After that, two things which you can treat it like a good to have because they are more important for the second category, like the understanding of data warehouses and understanding of ETL frameworks. And last would be the exposure of cloud services. As a fresher, you are exploring it, then it's really, really good because different cloud providers give you free access of their account with limited services. You can utilize it and learn how cloud is working with the big data. Else, if you are doing it in your system and trying to just do some hands-on, that is also good. No worries. But whatever I've talked about on a high level, those are the important and relevant skill sets for data engineering. Thanks. That was an awesome explanation. I mean, काफी clarity के साथ. So moving on to the next thing, that after you graduated in 2017 from NIT Allahabad, you got to get in three major companies, starting Yeah. from Paytm to McKinsey, and then working in Amazon right now. So how's the work life in these three major companies? Okay. So Paytm, as I already talked about, that there I got to learn so many things. So Paytm का जो culture था, that was obviously startup kind of culture. Like you have to have work in the strict timelines. There probably things won't be that managed. Let's say जब मैनेज कंपनीज में हम काम करते हैं तो वहां पे होता क्या है कि यू विल बी हैविंग सम सेट ऑफ टाइमलाइंस कि इफ बंदा अगर इस चीज में स्टाफ्ड है सो ही एंड शी विल बी प्रॉब्ली वर्किंग ऑन दैट पीस ऑफ थिंग टिल 2 months और 3 months, समथिंग लाइक दैट। बट वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये करना है, अभी ये मैं बना रहा था कुछ, इधर टर्न लो, बनाओ इसको। तो ये सब चीजें भी लर्न करना इंपॉर्टेंट है। एंड स्टार्टअप, दैट्स हाउ इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर करियर। That's the important of like working in a startup side. If you want to learn good skill sets, if you want to learn open stack or open tech stack, that's a good way to start your journey with the startups. If you like आपको काम करना है अंडर द प्रेशर, बिकॉज इनिशियल फेज में करना चाहिए। आई डेफिनेटली पर्सनली थिंक इनिशियल फेज में यू शुड लर्न हाउ टू डील विद द प्रेशर, ठीक है, क्योंकि वहां से आपका स्किल सेट इंप्रूव होता है। सो दैट वाज द कल्चर इन पेटीएम साइड। एंड मैं थोड़ा सा अजीब आदमी हूं क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। सो छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने करा था अपने 10th में। मैंने रैंडमली कॉमर्स ले ली थी क्योंकि मेरे को थोड़े कीड़े काट रहे थे कि कॉमर्स नहीं पढ़ी अब तक, लेट मी सी कॉमर्स यार में होता क्या है। तो मैंने रैंडमली ले लिया, बोर्ड से This मार्क्स। is actually so very interesting. Like you can tell people that people, even from people from commerce background, are cracking Amazon. So it's nothing is impossible in today's world. If you keep on trying, and you will succeed one day. एग्जैक्टली। सो अब बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आ गए, घर वालों की होप बन गई, लड़का कॉमर्स में अच्छा है, इसको हम देते हैं डायरेक्शन एक। अब मैं फिर से, मेरे को कीड़े काट गए, मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कॉमर्स नहीं, थोड़ा साइंस में जंप करना है। आई वांट टू सी कि फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में आगे टीचिंग वगैरह में जाना है। घर वाले परेशान, ये अलग ही सन की आदमी है, कुछ भी कर रहा है। सो अपना मैंने 10+2 पीसीएम से क्रैक करा, ठीक है। एंड फिर मैंने स्टोरी तो बताई कि जा रहा था फॉर्म भरने पीसीएम का रैंडमली, और थॉट आया कि कंप्यूटर्स बचा हुआ है। आई टुक दैट कॉम्बिनेशन फिजिक्स मैथ कंप्यूटर साइंस, एंड एक अच्छा डिसीजन प्रूव हुआ वो, नाउ हियर। एंड जब मैं पेटीएम में काम कर रहा था, ऑल्दो इट वाज अ प्रोडक्ट कंपनी, सब कुछ सॉर्टेड है, एंड पीपल यूज्ड टू कमेंट, भाई यू शुड गो फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, यू शुड गो फॉर द स्टार्टअप्स, योर learnings will be like awesome.
बट मेरे को नहीं यार, मेरे को कंसल्टिंग फर्म भी देखनी है कि कंसल्टिंग इन्वायरमेंट में काम कैसे होता है। आई जस्ट वांट टू सी, मतलब तो समझ रहे हो ना, आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद माय प्रोफाइल्स टू। सो दैट्स हाउ आई लर्न। लाइक अभी 4 साल हो गए हैं, एंड ये 4 साल में मैंने इतना कुछ सीख लिया ना, कह लो कि घाट घाट का पानी पीना, तो बहुत ही ज्यादा मैंने पानी पी लिया है। सो मैंने केवल एक्सपेरिमेंट के पर्पज से आई ज्वाइंड मैकेंजी। there I wanted to see, okay, if I'm working as a consultant, probably I could be a good fit for this profile, or I couldn't. So that was the thought at that time. So लाइक 4 महीने में छोड़ने का रीजन यही था कि मेरे को क्विकली रियलाइज भी करना था। इट आपको अपने डिसीजन मेकिंग के साथ भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इनिशियल फेज में होगा और या कहीं भी स्विच कर रहोगे, सो होता क्या है ना, एक फैक्टर हमेशा ध्यान में रखना आप लोग कि दूर से चीजें बहुत अच्छी लगती हैं नाम पढ़ के, और कि क्या वहां पे बना रहे हैं, क्या प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, वो सुन के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बट आपको एक्चुअली जब वहां जाके आप 2 से 6 महीने बिताते हो, तब आपको रियलिटीज पता लगती है। सो मैकेंजी के साथ में मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था, मेरे कुछ पर्सनल रीजंस भी थे, क्योंकि यार मैकेंजी की लाइफ इतनी ज्यादा रॉयल थी, आई कुडंट बिलीव कि कोई कंपनी इतनी रॉयल लाइफ कैसे दे सकती है। ठीक है। सो कंसल्टिंग एनवायरनमेंट मेरे को लाइक बाहर ही रहना था, एंड दे वर प्रॉब्ली लाइक टेलिंग मी दैट दे विल शिफ्ट मी टू द लंदन ऑफिस, तो वो मेरे को वहीं पे भेजने का कर रहे थे। एंड मैं थोड़ा इंडिया से बाहर ना जाने वाले में से हूँ, मेरे को ज्यादा इंडिया से बाहर का रहना पसंद नहीं है, मतलब मजा नहीं आया मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने मैकेंजी ज्वाइन करी, उन्होंने मेरे को पहला प्रोजेक्ट मेरा थाईलैंड में था, तो मेरे को वहां पे भेज दिया। एंड लाइक जब ज्वाइन करा डे 1 पे, आपको एप्पल के फोन मिल रहे हैं, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन, आपको मैकबुक्स मिल रही है सबसे बड़ी स्क्रीन वाली, एंड आपको लग्जरी, आपके पास कार्स हैं जिनमें आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास बिजनेस क्लास की टिकट है जहां से आप वहां पे, ये नहीं है कि आपको 6 महीने के लिए हमने भेज दिया और आप 6 महीने प्रोजेक्ट खत्म करके ही आओगे। आप जाओ, आपको अगले हफ्ते बोर फील हो रहा है, जस्ट टेक अ फ्लाइट ऑफ अ बिजनेस क्लास, एंड आप अपने वीकेंड्स में अपने घर आ जाओ और फिर चले जाओ थाईलैंड, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सो यू कैन प्रॉब्ली सी कि वो कितना अपने एम्प्लॉयज पे इन्वेस्ट कर रहे थे, एंड वो रॉयल्टी मेरे लिए बहुत अमेजिंग थी। मैं लिटरली मन में सोच नहीं रहा था कि मेरे को रॉयल लाइफ छोड़नी चाहिए या नहीं, एंड मैं सोच बहुत ही मिडिल में था यार कि कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए, मैं बहुत अच्छा एनवायरनमेंट छोड़ने की सोच रहा हूँ। बट देयर आई गिवन प्रायोरिटी टू माई थॉट्स, एंड कि मुझे एक्चुअली पसंद क्या है। कंसल्टिंग में मैंने खुद ये सोचा कि प्रॉब्ली आई एम नॉट अ गुड फिट फॉर इट, क्योंकि यार वो मजा नहीं आ रहा था, सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, काम में वो चीजें। एंड कंसल्टिंग में होता क्या है कि यू विल बी वर्किंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, एंड प्रोजेक्ट्स की लेंथ भी छोटी होगी, 3 मंथ्स 4 मंथ्स के प्रोजेक्ट्स होंगे। बट समहाउ मैं हमेशा से वैसा बंदा था कि जिसको फ्रेमवर्क्स में मत बांधो कि प्री प्रायोरिटी टूल्स पे काम करना है या उस पे करना, अगर उसमें बांधोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो ही मेरे को थोड़ा अंदर से फील होने लगा कि नहीं, प्रॉब्ली ये चीज सही है मेरे लिए। एंड जल्दी ही डिसीजन लिया कि आई शुड गो फॉर अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, क्योंकि अगर लेट करता 6 और 8 मंथ काइंड ऑफ थिंग, तो फिर मेरे लिए बहुत बीच में मैं आ जाता कि अब करना क्या। तो वो 4 महीने वहीं पे, मतलब 2 महीने ही काम करा और 1 डेढ़ महीने नोटिस पीरियड एंड ऑल में सब कुछ निकल गया। तो 2 महीने में ही मैं काफी कुछ घूम लिया, सब रॉयल्टी भी फील कर ली। सो मैकेंजी टू बी वेरी चिल, बट इट्स ऑब्वियसली हार्ड टू क्रैक। लाइक आईआईएम्स के बंदे मरते हैं इस कंपनी में जाने के लिए, ठीक है, उनको पता है कि कभी पूछना मैकेंजी की वैल्यू किसी से भी पूछनी हो, मैनेजमेंट वाले बंदों से पूछना, ठीक है, जो आईआईएम्स में टॉप आईआईएम से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आईएसबी वगैरह से निकले हुए, उनसे पूछना कि मैकेंजी की वैल्यू क्या है। तो भाई उसके लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा बहुत, मगर अच्छी कंपनी है। अगर ऐसा तुम लोग चाहते हो ऐसी लाइफ मिले तो यार जा सकते हो, बेस्ट कंपनी, रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। बट अगर प्रोडक्ट पे काम करने वाले बंदे हो तो देन यू शुड टारगेट दीज थिंग्स अकॉर्डिंगली। सो ये मेरा सिंपल सा फंडा है ना। अमेजोन में सिंस इट वाज माय ड्रीम कंपनी, आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ, आई एम एंजॉयिंग माय वर्क। लाइक इतना एक्सपोजर मिला क्लाउड सर्विसेज का एंड नए रिक्वायरमेंट्स पे काम करने का, नए स्किल सेट्स पे। सो फार सो गुड। So kahin na kahin aapke liye you were very much highly goal oriented. Like you Yeah, have dreamed of getting into the Amazon. So you took time, but you went there. yeah. And perks and all these things, luxuries, that is exactly what we are guys are dreaming about. I mean, getting into Thailand or stuff like that, getting into California.
working for the Silicon tech giants. But the story that you've told that it really explains us that all these things really don't matter if you love the work, Correct. and you will grow somewhere in that industry if you. Definitely. So that was half of today's sessions.